Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome back to yet another new vlog. This is not going to be a too productive one or a study vlog, but this is going to be a day before my or an hour before my practical exams of chemistry. So today is 5th of February and tomorrow is 6th of February. So tomorrow I'm having my chemistry practical. So I was actually doing the revising the practicals, going to the practicals like when I was actually doing the titration part. And मुझे ये बहुत अच्छे से आती है. Over here I was doing the titration part condition की बहुत ज़्यादा सबसे अच्छी से आती है. So basically है क्या हम लोग के syllabus में. Like we are having in practicals volumetric analysis, that is of oxalic acid versus KMnO4, and another is more salt versus KMnO4. So these are the two titration out of which they can ask any one. And the salt analysis, another one is just to identify the basic or acidic radical and the conformative test, etc. And after all the वो फाइबर वगैरह practicals है ही देखने के लिए, बस these are the main topics. But मेरी अच्छे से तैयार है titration and acidic or basic radical I can do that, but I don't know, still I'm too scared since जब ICC में थी, like I don't know about anything about anyone, but whatever I used to heard is like that in CBSE, maybe in class 10 they used to go for some externals maybe used to come, but I'm not sure. As you see, I can say that in our time there was no external who used to come, and though our school was affiliated, most of the every ICSE schools are affiliated rather than in CBSE. Many are there which are not affiliated, which will have their own branch in some other place like mine. In the recent school which I'm studying, it's a CBSE board, so it's having a main branch where we have to go for MP examinations, practicals, and etc. So for today, like obviously today, like right now it's around 1:30 a.m. Okay, so we need to go to another school for the examination, as well as we have appeared for pivots on that the particular main branch, which is there on the Barakpur. So all right. So we need to go there and to go give our practical. And you know what? I'm so scared like that. Because 10 में ऐसा होता नहीं था. 10 में बस अपना स्कूल का ही टीचर्स लोग देखता था, and जो भी एग्जाम रहता था अपने स्कूल में देते थे. And even the boards also we have them in our own school. So अभी CBSE में शिफ्ट होने के बाद everything had really changed, and the question pattern, paper, every single thing. So मेरे को चला कि बात पे चली जा रही है. Anyways, coming to the main topic is that मैंने अपनी सारी चीजें खरीदा है, क्योंकि they have asked us to bring the tissue holder, platinum wire, and gloves. Another is upload is the most essential thing. So I don't know, नहीं स्कूल वाले ने ये भी कहा है कि just go through your practicals and the investigatory project for, क्योंकि they can ask the questions from there too. And अगर चैप्टर की बात है तो I'm still there with my backlogs, like कुछ चैप्टर्स है जो कि अभी तक नहीं हुआ, just gonna revise those, then we'll be done. So here these are the titration papers where I had written all the titration, like how we need to do. So this is of the titration of more salt versus oxalic acid, and more salt versus KMnO4, and this is of oxalic acid versus KMnO4. And here you can see I have brought this one, like gloves, platinum wire, and it is to follow. And here are my practicals which are ready at this moment. So मैं just इसको revise करूँगी. And you know what? I just a few minutes ago, I mean few hours ago, मैं और मम्मा पूरा बैठ के जस्ट लास्ट का 3-4 बाकी था जो कि स्कूल से रिसेंटली प्रोवाइड किया गया था, क्योंकि अदरवाइज आई वाज लिटरली डन एंड मैंने चेक हो चुका था 19 तक, एक्सपेरिमेंट 19 तक. यू कैन सी दिस इज चेक्ड, बट इधर से चेक नहीं है क्योंकि लाइक ये जस्ट रिसेंटली स्कूल ने दिया. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट लाइक स्कूल वाले डजंट even bother to understand our situation, like what we could do. बच्चा लोग बोर्ड्स के लिए पढ़ेगा या फिर प्रैक्टिकल लिखेगा. सो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग. तो मैं आज ही बैठ के कंप्लीट किया. मम्मा वाज द वन जो कि ज़्यादा हेल्प कर दिया. एंड हियर इज़ माय इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट जो कि मेरा हो चुका है थोड़ा सा. सो ऑलराइट, सो तो रिवाइज कर लेते हो गाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, लेट्स गेट इनटू द रिविजन मोड. ऑलराइट.
बाद आई टुक अ नैप जस्ट बिकॉज मैंने पूरा रात भर नहीं सोई थी. And I want to remind all of you guys, the ones who are going to prepare preparing for the boards on 2027, and जिन लोग को भी बाकी है, आई होप किसी का बाकी नहीं है प्रैक्टिकल अभी तक, सब लोग का हो चुका है. लाइक मैं खुद अकेली थी जिसका स्कूल में अभी तक भी प्रैक्टिकल्स बाकी था, even though we are going. So I'm going to suggest you that don't get scared for your practicals exam because they are really really easy, and the easiest one that you can never think about that. क्योंकि हम लोग स्कूल गए थे and teachers just said us like you don't have to worry about that, just stay confident and don't say some toggle type of keywords that might be so difficult to get understand by the externals. So हम लोग वैसे ही थे, we were like on a confident mood, and teacher just literally helped us. Like जब लिख रहे थे प्रैक्टिकल, so they literally give our notes out of that. जो प्रैक्टिकल दिया था सजेस्ट किया था उसी का नोट्स बनाया हुआ था, and we were just seeing that and copying. And उन्होंने बोल दिया था कि जस्ट इतना टाइम के अंदर में तुम लोग कॉपी करना है, एक्सटर्नल आके जस्ट when external arrives just hide that paper which we have given you. So हम लोग पूरा हाइड कर दिए थे वो पेपर को, और क्वेश्चन जो पूछा था, आई मस्ट सजेस्ट यू गाइस दैट द notes which are suggesting जो कि तुम लोग के स्कूल से दे रहा है, just go to that because that's the most essential one and that's the place from where they ask the questions. And हम लोग के केस में वही हुआ था, हम लोग बस प्रैक्टिकल पढ़ के गए थे, नोट्स पढ़ के गए थे, तो नोट्स से उधर जैसे पढ़ के नहीं गए थे, जस्ट we had gone through our practicals and उधर जाके भी टीचर वही बोला था, तो प्रैक्टिकल पढ़ के गए थे, प्रैक्टिकल से कुछ भी नहीं आया, जस्ट one question that was like which is the self indicator and we can say that came in a 4. उसके बाद से कोई भी मुझे हम लोग एंड उसके बाद से कोई भी आंसर हम लोग को नहीं आया था. सो ये था. एंड और तो और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द टाइट्रेशन पार्ट. टाइट्रेशन वाज क्वाइट इजीएस्ट वन, एंड उन्होंने तो बोला था कि प्रैक्टिकल्स भी नहीं होगा, बट कुछ रीजन हो गया था. मतलब कोई बच्चा था कि बोल दिया था कि जी मैम नहीं हुआ प्रैक्टिकल हम लोग का, मतलब एक दिन बोला था जिसके कारण मैम का दिमाग सटक गया था, तो उन्होंने फिर से बोला कि चलो और एक बार प्रैक्टिकल्स करके दिखाओ तुम लोग आता है कि नहीं. एंड दैट वाज द टाइम जब टाइम शिफ्ट हो गया था कि लाइक सब चीज़ें चेंज हो गया था कि लाइक हम लोग सोचे कि हो जाएगा, तब लिटरली वी वर मतलब धड़कने तेज हो गया था इतना, मतलब सब कुछ उल्टा सीधा हो गया था, कुछ एज टू सपोर्ट वगैरह कुछ मिल नहीं रहा था आपके सामने, तो हम लोग किए नहीं थे. एंड उन्होंने बोला कि कंसंट्रेटेड लगेगा, डायलूट नहीं लगेगा, तो उसके बाद वी वर फाइंडिंग दैट, तब मैम बहुत चिल गई थी. तो जस्ट आई वांट टू से जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट एंड व्हाटएवर योर क्लास टीचर इज सेइंग जस्ट रिमाइंड दैट, एंड उसके बाहर कुछ मत करना, क्योंकि अगर करोगे तो कुछ चीज़ें बदल जा सकती है और एक्सटर्नल भी खराब सोच सकते हैं. तो व्हाटएवर योर टीचर इज सेइंग यू जस्ट डू दैट ओनली, स्टे कॉन्फिडेंट. ओके, कुछ जो टीचर तुमको समझा दे रहा है उससे बाहर जाके ज़्यादा मत बोलने का, क्योंकि चीज़ें बदल सकती है. जैसे हम लोग के केस में हुआ था, वी वर सो स्केयर्ड ऑन दैट मोमेंट, लाइक शी इवन तो उन्होंने ये भी डिसीजन ले लिया था कि हम लोग के नाम ब्लैक लिस्ट कर देगा, इतना डर गए थे हम लोग. एंड उन्होंने सब बोला कि टाइट्रेशन और फ्लेम टेस्ट करके, जो लोग फ्लेम टेस्ट में गया था करने के लिए उन लोग का पूरा फट के 4 हो गया था. एंड वी आर द ओनली वन, जो कि टाइट्रेशन इज मोस्ट इजीएस्ट वन, एंड दे हैव आस्क्ड अस टू डू द मोलारिटी इन बाय 50 ऑफ ऑक्सैलिक ऑफ मोर सॉल्ट वर्सेस केमिनो4, तो वो हम लोग कर दिए थे. एंड बहुत ही अच्छा कलर आया था, एकदम लाइट पिंक. और सुनो, प्रैक्टिकल प्रोबेबली बहुत इजी होता है, एंड अदर से मार्क्स क्लास टीचर के हाथ पे रहता है, और जस्ट 5-10 मार्क्स एक्सटर्नल के हाथ पे रहते हैं. सो डोंट वरी अबाउट दैट, यू विल गेट 29 or 28 or 30 अगर तुम प्रैक्टिकल सबमिट किए हो. अदरवाइज इफ यू आर नॉट सबमिटिंग योर प्रैक्टिकल्स देन ऑफ कोर्स यू आर गोना गेट अराउंड लाइक 25 out of 30 or 27 out of 30. एंड डोंट वरी अबाउट प्रैक्टिकल, जस्ट गो through your board's preparation. Okay, just make your board preparation better because that's the only one where your marks decides. Theory part is the most important thing, so I want to say this. And the one who are going to prepare for your boards on the next year, I'm just reminding you that don't get scared for your practicals. Practicals are the most easiest thing in this whole world. So yeah, best of luck for your boards, and best of luck for the ones who are appearing the boards with me, or I can say on this year. So and best of luck for me too. Thank you. Do like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Bye bye.